So, yes, in the last class, we had discussed the political uh, development in terms of wars and expansions and kingdoms and dynasties. यही किया था ना? So now let's formulate what we did. Uh, अब ये सबको एक स्टेट फॉर्मेशन के नजरिए से देखो कि किस तरह से फ्रॉम सेकेंड सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स स्टेट फॉर्मेशन डेवलप किया था. State has been seen as a key formation of modern politics and often as indispensable to the maintenance of complex societies. मॉडर्न इंडिया में स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं कि स्टेट has been seen as the key formation of modern politics and often as indispensable to the maintenance of complex societies. Complex societies के maintenance के लिए state की बहुत आवश्यकता है. Without that, it is not possible to organize things. हालांकि ancient times में भी ये elements थे. However, within political writing and analysis, it is difficult to find the consensus about the state. Political writings में और analysis में state का सही definition ढूंढना बहुत मुश्किल था. Theorists from different perspectives failed to agree on most of the important questions we might ask. What is the state? What does it do? How is it organized? Who runs it? और इसको एक पर्सपेक्टिव से नहीं कई पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है स्टेट को. और इन दैट केस द थियरिस्ट हु वर डिफाइनिंग स्टेट वेयर they were defining state from different perspectives. They were looking for the answers for these questions. बड़ा सिंपल लगता है लेकिन इसके जवाब नहीं मिलते. Most widely accepted of the modern voluntaristic theories is the one which is called automatic theory. According to this theory, the invention of agriculture automatically brought into being a surplus of food, enabling some individual to divorce themselves from food production and to become potters, weavers, smiths, masons, and so on, thus creating extensive division of labor. कहते हैं जो वॉलंटरिस्टिक थियरी है जिसको कि मैं समझती हूँ ऑटोमेटिक काइंड ऑफ थियरी था, इसमें एग्रीकल्चर का इन्वेंशन जो हुआ उससे सरप्लस फूड प्रोडक्शन हुआ. कुछ इंडिविजुअल्स उस क्योंकि फूड प्रोडक्शन ज़्यादा था तो अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से हट करके फूड प्रोडक्शन से हट करके दे बिकेम पॉटर्स, वीवर्स, स्मिथ्स, मैसन्स और भी ऑक्यूपेशंस में चले गए. तो एक सोसाइटी में काइंड ऑफ एक्सटेंसिव डिविजन ऑफ लेबर वाज क्रिएटेड. आउट ऑफ दिस occupational specialization, there developed a political integration which united number of previously independent communities into a state. इतने सारे occupational specialization led to this political integration. बहुत सारे independent communities एक state में आकर के form हो गए. And this argument was set forth most frequently by the late British archaeologist V. Gordon Childe. He's a famous among students. V. Gordon Childe. ये theory
propagate कर रहे थे, we gotten child also. The principal difficulty with this theory is that agriculture does not automatically create a food surplus. We know this because many agricultural people of the world produce no such surplus. फूड सरप्लस नहीं होता था एग्रीकल्चर से, ऐसा मानना है. तो ये जो थियरी है, देयर इज अनदर थियरी ऑफ स्टेट ओरिजिन, कार्ल विटफोगल्स हाइड्रोलिक हाइपोथेसिस. ये भी वॉलंटरिस्टिक थियरी ऑफ स्टेट था. कार्ल विटफोगल्स हाइड्रोलिक हाइपोथेसिस. Wittfogel sees state arising in the following way. In certain arid and semi-arid areas of the world, where village farmers had to struggle to support themselves by means of small-scale irrigation. Irrigation बहुत valuable था एग्रीकल्चर के लिए, इसीलिए विटफोगल ने हाइड्रोलिक हाइपोथेसिस दिया. A time arrived when they saw that it would be to the advantage of all concerned in the villages, and these villages merged into larger political unit capable of carrying out irrigation on the broader scale. बाद में आपने देखा है डैम्स का क्रिएशन स्टेट की तरफ से, wells, tanks. The body of officials they create and to devise and administer such extensive irrigation works brought this state into being. कह रहा है कि जो हाइड्रोलिक हाइपोथेसिस है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इरिगेशन एग्रीकल्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि सभी एरियाज में तो नदियां थी नहीं. तो इस इरिगेशन के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने, बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स क्रिएट हुए, वो एडमिनिस्टर करने लगे इरिगेशन को, और इस तरह से स्टेट का क्रिएशन हुआ. ये भी एक थियरी है. A close examination of history indicates that only a coercive theory can account for the rise of state. Coercive theory, force, and not enlightened self-interest is the mechanism by which political evolution has led, step by step, from autonomous village to the state. Herbert Spencer इस फिलॉसफी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में ये लिखते हैं कि फोर्स और कोअर्शन, जैसे पॉलिटिकल पावर्स थे, कुशान रूल था, शक रूल था, मौर्यंस थे, गुप्तास थे. A war played a decisive role in the rise of state. Historical or archaeological evidence of war is found in the even in the early stages of state formation in way back in Mesopotamia, Egypt, India, China, Japan, Greece, Rome, Northern Europe, Central Africa, Polynesia, Middle America, Peru, Colombia. इन सब में ये सब बहुत prominent examples हैं, to name few. Mesopotamia, Egypt, India, China, जो हम पढ़ते भी हैं. So warfare is surely a prime mover in the origin of state, and it cannot be the only factor. कई दुनिया के कई कोने में वॉर्स हुए लेकिन स्टेट इमर्ज नहीं किया. बट इसका मतलब सिर्फ वॉरफेयर नेसेसरी कंडीशन नहीं है, और भी फैक्टर्स जो पीछे डिस्कस किए गए वो भी थे. हाइड्रोलिक हाइपोथेसिस मेसोपोटामिया, चाइना वगैरह में काफी सक्सेसफुल रहे थे. इरिगेशन प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट role. So overall, what we see that the term state is a loaded one. It owes its origin to particular
to particular thread of circumstances in history. तो बट हम पास में हरप्पन स्टेट की भी बात हुई है, पौशल ने हरप्पन स्टेट के बारे में कहा है, एंशिएंट स्टेट was a form of political organization. Administration of state was prominent feature. Bureaucracy in the state was important. Craft and career specialist. ये गॉर्डन चाइल्ड ने भी कहा है, state monopoly on certain control on certain agencies to protect people. Diplomacy, warfare. और हम जब 6th century BC के बाद आते हैं तो वर्ण और class becomes the basic political factor in Indian context. So kingship or monarchy was normal form of ancient Indian polity. Maybe, said to have its origin in caste system, जो कि आगे हम करेंगे, एक chapter है. Ruling being a caste function assigned to the Kshatriya or the warrior class. According to some historians, property, family, tribe, caste, religion, land system, all these contributed to the formation of political ideas and institutions in early India. What is that? Property, family, tribe, caste, religion, land system. ये state formation में काफी important factors थे. Or all through when I was discussing the political history, it showed. So लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम मॉडर्न डेफिनेशन से एंशिएंट टाइम्स को देखते हैं, तो देयर इज अ टेंडेंसी टू ट्रीट हिस्ट्री एज एन एली ऑफ dogma and to expect most modern qualities of ancient institutions. And this has led to obscuring of several important issues and vitiating the findings of the scholars of the past. कहते हैं जब हम मॉडर्न एंगल से एंशिएंट स्टेट को देखते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हमें नहीं मिलते हैं जो मॉडर्न स्टेट में है, तो हमें लगता है कि एंशिएंट टाइम्स में स्टेट नहीं रहा होगा वगैरह वगैरह. तो ये विशिएट करता है स्कॉलर्स की फाइंडिंग्स को who are looking into the past. And this has seriously prejudiced the correct understanding of the social background in which institutions grew and developed in ancient India. In ancient India, it is advocated that political thought was treated as a separate branch branch. Ancient Indian state was a sovereign state, but not like modern sovereign state. And religion played important role in state and society in ancient India. Okay, so as for the question, how to define state, we do not get much clue in the context of ancient political state of affairs, as there was no mention of state in early times. Say early Vedic literature में state के बारे में कोई जिक्र नहीं है. There were tribal organizations, folk assemblies, communal institutions with rudimentary setup, administrative setup. पोस्ट वैदिक टाइम से 6th century BC तक आते आते थोड़ा सा ट्राइबल रिपब्लिक्स ऑर्गेनाइज्ड हो गए. सप्तांग थियरी ऑफ स्टेट
डेवलप किया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका जिक्र है। तो मौर्यन स्टेट का डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो स्टेट के 7 लिम्स कौटिल्य बताते हैं कि मास्टर दैट इज मोनार्क, ऑफिशियल, पीपल, फोर्टिफाइड कैपिटल्स, ट्रेजरी, आर्मी, फ्रेंड, ये 7 एलिमेंट्स थे स्टेट के। और भी बहुत सारे लोग स्टेट फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, पर्टिकुलरली आर एस शर्मा, रोमिला थापर, डी डी कोशाम्बी, नीलकंठ शास्त्री फॉर साउथ इंडिया, ये एच सी राय चौधरी की पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया पढ़ो, वो बहुत अच्छा है। तो स्टेट इन इंडिया हैड लॉन्ग हिस्ट्री बिफोर वी एंटर्ड फर्स्ट मिलेनियम बीसी. The beginning of primary process of state formation in tribal and lineage system में था. We locate those systems in the chronological setup in early Indian history. कहते हैं ना हरप्पन स्टेट, वैदिक, महाजनपद पीरियड, they characterize the presence of state. केपी जायसवाल की बुक, मैंने आपको जब नेशनल हिस्टोरियन पढ़ाया था तो बताया था इसके बारे में, इंडियन पॉलिटी. It was published in 1924 and this book became very famous as Hindu polity. Ancient Hindu political system was partly Athenian type, which he says constitutional monarchy था. ऐसा कुछ था नहीं, बाद में लोगों ने इसको रिफ्यूट किया. पॉपुलर असेंबलीज थे लेकिन पौरास था, जनपदा था, acting as a check on the powers of the king. And these organizers, वो तो कंपेयर करते हैं कि यूरोप के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन से भी ज़्यादा एडवांस था. तो और उसको कहते थे गोल्डन एज ऑफ पॉलिटी था इंडियन स्टेट का. बाकी मैंने आपको पढ़ाई है वो 4-5 किताबें थी. पी.एन. बैनर्जी की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया, के.वी. रंगास्वामी अयंगर की सम एस्पेक्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटी, आर.सी. मजुमदार का कॉर्पोरेट लाइफ ऑफ एंशिएंट इंडिया, एन.एन. भट्टाचार्य का एस्पेक्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटी. पीछे मैंने पढ़ा रखा है इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ. ये सब कुछ बुक्स थी जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, बीके सरकार की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड थियरीज ऑफ हिंदुइज्म. यू नीड नॉट रीड द बुक्स बट यू शुड नो. ये सब थी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करती थी. एन.सी. बंदोपाध्याय, यूएन घोषाल, ये सब मैंने आप लोगों को डिस्कस किया हुआ है. डी.आर. भंडारकर, some aspects of ancient Hindu polity. So Vedic polity constituted, though we are doing from 2nd century, but just to have a glimpse of the ancient Indian state, I am starting from there. Vedic polity constituted of tribal organization, that is Vis, Jana, which slowly transformed into Gram and Rashtra. Cult of sacrifice and territorial acquisitions empowered the king and the priest. Then towards the end of the Vedic period, tribal allegiance had begun to make way for territorial allegiance, and loyalty of people was getting transferred from tribal organization to political organization, political units. So now you see the relationship between Raja and others. So authority was embedded in the throne. 6th century तक आते आते political जनपदास आ गए. Fairly defined boundaries थे. They came into existence. Headquarters बन गए जनपदास के, capitals बन गए. कुछ उसमें से बड़े जनपद हो गए जिनको कि महाजनपद कहने लगे. अर्बन मिलियू हो गया, सेटअप हो गया. लीगल और आइडियोलॉजिकल आउटफिट्स हो गए इन महाजनपदास के.
defined caste systems थे. So the existence of variety of states in 6th century BC is demonstrated in early Pali and Prakrit texts also through the use of terms as Janapada, Mahajanapada, Ratha, Antararatha, Tiroratha, Desa, Pradesh, Janapada Mahapadesh, Jana, Sangha. ये सभी पाली टेक्स्ट में आपको देखने को मिलते हैं और प्रकट टेक्स्ट में. जनपद और महाजनपद इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए थे. निगम कहते थे ट्रेडिंग सेंटर्स को. गामास वेयर विलेजेस एंड नगर्स वेयर सिटीज. इनके बारे में बहुत डिटेल में नहीं करेंगे. This there were complexities in the political processes that the king required an efficient administrative system as a control of mechanism. And inseparably associated with the formation of state is growing military power of the ruler, whose coercive authority is duly recognized. Then maintenance of royal functionaries, well organized fighting force, military power, availability of resources through revenue measures. Sharma highlighted the linkage between the taxation and the state formation. The formation of state further indicates the emergence of complex societies which in in which sharp social differentiations marked by both ritual and actual status is well established. The most prominent monarchical states in 6th century were Koshal, Vats, Avanti, Magad, and this emergence of early states often coincide with the urbanization. Ganges Valley was also no exception to this pattern. Up to middle Ganges Valley. Ganges Valley in general and the middle Ganges in particular were labeled as area of attraction by B. Subbarao. And Mahajanapad of Magad was empowered with rich mineral resources, growing use of iron, technology, craft, production, manufacture of weaponry, and enhanced, which enhanced the power of the state. सभी मगध की तरह इस तरफ इसीलिए अट्रैक्ट होते थे इन फैक्टर्स की वजह से. S.C. Rai Chaudhary and D.D. Kushambi have drawn our attention to regular availability of elephants in Magadhan army. An advantage of having its capital Rajagriha naturally secured by 5 hills around it. We also see social laxity in Magad as the rulers of there were rulers in Magad who did not have Kshatriya origin. तो ऑर्थोडॉक्स वैदिक नॉर्म्स से हटकर ही यहाँ वर्ण स्टेटस होता था. The images of intense political activities available in context of Magad Mahajanapada.
मगध को तो वैदिक लिटरेचर में बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि ये क्रेडल ऑफ वैदिक कल्चर में नहीं है, लेकिन बाद में मगध एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एंटिटी बन करके सामने आया। अर्बन सेंटर भी था, रिवराइन पोर्ट थे गैंजेस पे, और थ्रू मैरिज अलायंस मगध कंट्रोल्ड काशी which was gifted in dowry to the prince. कौशल भी मगध में एनेक्स कर लिया गया बाद में, जितने गण राज्य थे उनको एनेक्स कर लिया गया। So Magad became most formidable power in the eastern part of Ganges Valley and Avanti in the west. मगध के किंग्स जानते हो आप, बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनायक, नाग और नंदास, मौर्यास, और उसके बाद ये शका कुषाण के फ्रे में आ गए, और बाद में गुप्तास का कंट्रोल मगध पे। We have discussed that how Alexander's invasion in Gandhar, a northwestern part of India, led to contact with the West Asia. And as a result of conquest of this region by Achaemenid rulers of ancient Iran, we have evidence of Achaemenid occupation through inscriptions. Even in classical texts, Heliodorus is mentioned. फिर अलेक्जेंडर इन्वेशन हुआ नॉर्थ वेस्ट में, Purus and Abhiras in Punjab resisted, and he had to return to Macedonia. उसके बाद मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था in 4th century BC. This was kind of first empire, and this was a logical outcome of struggle for supremacy between the various kingdoms. Efficient administrative system था, political integration था. They had accommodated many monarchical entities which had already experienced state system. There's mobilization of resources. Thapar says the making and maintenance of the empire demand constant adjustments, accommodation, and maneuvering of many factors. And therefore, it is not static situation, but witness a lively process. कहते स्टेट मेकिंग है में और मेंटेनेंस में, एम्पायर के मेंटेनेंस में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स, एकोमोडेशंस और मैन्यूवरिंग करनी पड़ती है, और ये कभी स्टैटिक नहीं होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. सो इट इज अ लाइवली प्रोसेस. सिचुएशंस चेंज करते रहते हैं, अकॉर्डिंगली रूलर को मैन्यूवर करना पड़ता है सब कुछ. मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी तो था नहीं, इस पे तो डिबेट है. मौर्य हम पढ़ नहीं रहे इसको डिटेल में, इसलिए नहीं बताएंगे. तो जो बैरत एडिक्ट है अशोक का राजस्थान में, बैरत में, वो भी उसको डेजिग्नेट करता है मगधन रूलर. तो मगध occupied central position in state formation, और इससे कभी, ये सेंटर से कभी हटा नहीं. This became core area. area.
लेकिन इसके साथ कुछ सेकेंडरी स्टेट फॉर्मेशंस भी हुए थे आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द इंपीरियल अथॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे जो सेकेंडरी, एक तो सेंट्रल area or the core area, then there was secondary state formation during this period, situated far away from metropolitan state and the Ganges Valley, where the peripheral areas like the northwestern borderland of the subcontinent and peninsular tract, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डरलैंड था और पेनिनसुलर ट्रैक्ट था। Through though paramount see of the Mauryas were retained, but it was unlikely that the Mauryan political control was uniformly exercised. ऐसा नहीं हो सकता था कि डीप डाउन मॉडर्न पॉलिटिकल कंट्रोल एक्सरसाइज होता रहा। तो कोर एरियाज में जो डिग्री ऑफ कंट्रोल था वो पेरिफेरल एरिया में नहीं हो सकता था। So how he controlled through administration, through suzerainty of the rulers uh, of Mauryan Empire over those rulers. अर्थशास्त्र बहुत बड़ी आर्मी का जिक्र करता ही है मौर्यन पीरियड में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, स्ट्रॉन्ग ट्रेजरी, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, दुर्ग, राष्ट्र, माइन, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, फॉरेस्ट, पास्चर लैंड, ट्रेड रूट्स, सबका जिक्र है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाज टैक्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। पिलर इंस्क्रिप्शंस में भी हैं अशोक के। तो ये शो करते हैं कि state had total control over the resources of the state, and this became became the important factor in state formation or controlling the state or strengthening the state, the local administration also. uh, so in between came the Shaka Kushan, where there's localization of power, and not in Kushan but in Shaka Kuran, or the rule of local rulers, but still trade continued, which we had discussed earlier. Um so about Gupta's political processes, the marriage alliance with the Lichvis resulted in incorporation of Lichvi territory. That also we had discussed yesterday, and that was a way of territorial expansion, and non-monarchical states had vanished by this time. An imperial Gupta state was established. Gupta seals were also found in Vaishali. Udayagiri inscription talks about Ganarajya of Sanakanika. That was also transformed into monarchical setup by Gupta period. Samudragupta had incorporated Malwa Jana Gana, Dasapura area, and gave tributary status to those princes.
So the process of transformation of a non-monarchical clan into a monarchical polity, and the rulers of the incipient state are often found to have assumed rather vague non-political titles like Nripati. And this resulted in gradual crystallization of state structure and resultant complex polity. ठीक है, जैसे जैसे नॉन मोनार्किकल क्लैंस जो थे मोनार्किकल पॉलिटी में इनगल्फ होते गए, तो जो रूलर्स थे नॉन मोनार्किकल क्लैन के हेड से, वो उनको स्मॉलर टाइटल से संतुष्ट रहना पड़ा, नृपति जैसे था. So we see the gradual crystallization of state structure और पॉलिटी को और कॉम्प्लेक्स होते हुए हम देख रहे हैं. Samanta chieftaincy in 4th century definitely experienced monarchical setup. Kamrup may also we see example is process of penetration of monarchical setup. Attavika forest area was also engulfed by the Guptas. So monarchical formation of monarchical state structure in the areas previously marked by the prevalence of pre-state societies speak of the advent of more complex society. In Indian conditions, the availability of and mobilization of resources, crucially important for emergence and consolidation of state society, had been effectively achieved by the expansion of agriculture, by the creation of agraharas or the revenue free settlements in favor of religious donis. And this advent of agriculture society almost invariably coincides with the appearance of gradual hardening of Varna Jati system, with which marked the Brahmanical norms and increasing inequality in the access of resources, state, and power. एक और टाइप ऑफ इंटीग्रेशन था, वो था pre-state to gradual incorporation of autochthonous cults or religious symbols into Brahmanical belief system. जो ट्राइबल कल्ट्स थे इधर उधर के, वो रिलीजियस सिंबल ब्राह्मणिकल बिलीफ सिस्टम में इनगल्फ हो गए. हरमन कुल के टॉक्स इन केस ऑफ उड़ीसा, where it says grant of land to serpent temple, grant of land to serpent temple in tribal area helped in legitimation of cult by new political power.
जैसे जैसे पावर और पोजीशन ऑफ किंग बढ़ता है उसका टाइटल भी बढ़ता जाता है. महाराजा धीराजा becomes the title of the king. Concept of divinity is recorded like on Samudragupta as Achintya Purush. He was called Achintya Purush. Chandragupta के कॉइन पे he is engraved as Vishnu. और कई बार हमने देखा है king has been selected, not the senior son becomes king. Like in case of Samudragupta itself, Ramagupta was elder brother of Samudragupta. Then functionaries like Amatya, Mantri, Sachiv, ये स्टेट को हेल्प करते थे बिल्डिंग में. प्रतिहार was the palace guard. बाद में प्रतिहार किंगडम बन गया. आर्मी के 4 कंपोनेंट थे गुप्ता में, कैवलरी, इन्फेंट्री, हस्ती और रथ. सेनापति था, पिलुपति था. कुछ टाइटल्स वैसे ही बता रही हूँ आपको कि मेजेस्टी के लिए. संधि विग्रही का ऑफिसर था ऑफ वॉर एंड पीस. दंड नायक था. भुक्ति, देशा, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे. विषया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. विषयपति mentioned in has been mentioned in copper plates. Then Vithi था representative of the artisan community. विलेज हेडमैन थ्रू आउट रहा है, वैदिक पीरियड से आज भी है ग्राम पंचायत का हेड. वो विलेज हेडमैन को कहते थे ग्रामिक. So we see here that the spread of state and urban society to a greater part of the subcontinent was following the pattern already encountered in the Ganges Valley, which can be seen during the period of from 200 BC to 300 AD. Mm. So we between this 200 BC to 300 AD, we have hordes of kingdoms like Shungas with Pushyamitra Shunga, Kanva. That was also Brahmin dynasty, which was by Shunga. Then we have presence of coins of Arjunianas, Kunind, Audumbara, Trigat, Agastya, Shibi, Yaudheya, Abhiraz, and Malav of Ujjaini. तो इतने सारे रूलर्स के कॉइन्स. तो ये छोटे छोटे जो संघास और रिपब्लिक्स थे बाद में मोनार्किकल किंगडम में आ गए. कलिंग में तो मैंने बताया आपको, खारवेल इंस्क्रिप्शन से पता लगता 4th सेंचुरी बीसी में कि मोनार्किकल स्टेटस था, मिल गया था. एंड दिस वाज सेकेंडरी स्टेट because during Mauryan Empire this was built as secondary state and continued after the Mauryan post-Mauryan period.
And this is clear example. This because why secondary state? Because the structure of the Kaling state was like the Mauryan state, little smaller but Mauryan state structure. And Hanthi Gufa inscription of the Kharwel. This gives early biographical sketch of the king, which deserves a more detailed summary as it represents the beginning of style of royal eulogy. और मतलब ये पहला इंस्क्रिप्शन था जिसमें रॉयल यूलॉजी शुरू हुई थी. The attributes of royalty such as conquest, patronage, and welfare of the subjects are accentuated with the royalty being emphasized in the sculptures and beliefs in surrounding caves. Kaling may have been supporting some chiefdoms also. दो लोग रथिका और भोजक, they are mentioned in Ashokan inscriptions. बाद में ये सातवाहन इंस्क्रिप्शन में भी these designations are there like Maharathi and Mahabhoja. Rathika and Bhojak of Ashokan inscription. Later in Satvahan inscription, we get Maharathi and Mahabhoja, implying they were chiefs who had been given administrative functions. जो खारवेल किंग्स थे, they linked themselves with the Puranic genealogies. छेदी था डायनेस्टी का रावण, तो रावण से अपना लिंक स्टैब्लिश करते थे. खारवेल्स डिड नॉट इशू कॉइन्स, वो मॉडर्न कॉइन्स से ही अपना काम चला रहे थे, क्योंकि कलिंग इकोनॉमी, इसीलिए इसको सेकेंडरी स्टेट भी कहा जाता है. यवन हैड कम फ्रॉम द वेस्ट एशिया. जितने भी फॉरेनर्स वैसे आते सबको यवन कहते हैं. पहला था डायोडरस, फिर एंटीओकस, डेमेट्रियस. गैंजेस प्लेन तक पतंजलि का महाभाष्य बताता है कि पहुंच उनके रेट्स पहुंच गए थे. मिनांडर मैंने कल बताया था कि बुद्धिस्ट हो गया था, और मिलिंद पन्हो में उसका कन्वर्सेशन नाग सेन और उसका डिस्कस्ड है. स्कीदो पार्दियन भी मैंने डिस्कस किया आपसे. सो नाउ you see that what were the factors operating in building state. Modern state को छोड़ दो तो there's number of states contending for hegemony. उससे interstate relations develop हुए political area में. मंडल theory जिसमें कि all state relations have been discussed. State also had to deal with economic and political developments outside the world also, like Roman, Chinese, Southeast Asian empires trade के through. So political thoughts and ideas about the governance were constituted within the framework of चतुर्वर्ग theory. चतुर्वर्ग theory के framework में political ideas और thoughts governed होते थे. और दूसरा राज्य धर्म, दंड नीति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 stages थे. King's relation to dharma was a complex issue. Dharma or political sovereignty were conflicting issue also. In King's धर्म के बारे में जो views थे different schools of thoughts के ancient times में, वो अलग अलग थे.
So when you see origin of state and kingship, it was to guard the society against anarchy. Constant vigilance was the duty of the ruler. State's function and responsibilities are maintenance of order and security and providing the welfare of the people. It seems curious that some Brahmanical texts that plead most vocally for putting checks on the power of the king so that it does not grow autocratic should be the ones to speak most glowingly about the divine nature of office of king. जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं एक तरफ तो वोकल हैं कि किंग के पावर पे चेक होना चाहिए और वही किंग को डिवाइन बनाते हैं. The Dharma Shastra and the Artha Shastra suggest that the office of the king has been compared to God to give power and authority. So, state in early India is plural social and economic setup, but Gupta period tak aate aate in you see their inscriptions, they trace their descent to, you know, even to God. प्रशस्तिज हैं इलाहाबाद प्रशस्ति पूना कॉपर प्लेट जो कि किंग के बारे में यूलोजीज बखान करते हैं. The processes of change in social and economic life do not permit clear cut dating like dynastic history. क्योंकि जो प्रोसेस स्टेट फॉर्मेशन का था, प्रोलिफरेशन ऑफ स्टेट था या प्रोलिफरेशन ऑफ जातीज थी, उसमें डेट का इतना सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता है. The expansion and diversification of economic activities led to the growth of variety of economic organizations. Shreni, Nigam, Puga, Prata, they are corporate bodies. Shreni, Nigam, Puga, Brata. Though difficult to describe the accurate role and function of these bodies, but they enjoyed political and economic significance and were allowed considerable legal and judicial power and also issued coins. Okay. Religious diversity with our state mein, agriculture we have discussed. So now we see there are two types of political authorities. One is centralized state structure and other one is federalized state structure. This is kind of rough indicator. So we do not see state as a uniform system, and the complexity of plurality was dependent on the size of the state. The extent and nature of integration with the government varied from area to area. Like parts of Kushan Empire abutted into Central Asia, and this fact brought it within the zone of Roman, Parthian, and Chinese interests. क्या हो गया? So we see that the geopolitical situations of the Kushan demanded a different set of priorities and responses than those of Guptas. कुशान का आधा एम्पायर तो बाहर था, सेंट्रल एशिया में था, उसका रोमन कॉन्टैक्ट था, पार्थियन और चाइनीज इंटरेस्ट थे. तो गुप्ता से कुशान रूल के स्टेट का डिफरेंट था. The territorial distinction
seem to have been made between metropolitan core areas and the peripheral areas. ये भी डिस्कस किया हुआ है, कोर एरिया अलग है, पेरिफेरल एरियाज अलग है. And this distinction is vividly reflected in Allahabad pillar inscription. Recording the multifaceted personality of Samudragupta. उसमें बताया ना किस तरह से कितना मेजेस्टिक किंग है और बाकी रूलर्स बड़े छोटे हैं, पेरिफेरल एरियाज हैं उनके. So state in early India had two contradictory forces. दो तरह के forces थे state के. One was homogenization, another was heterogenization. Because state had to accommodate a variety of communities and variety of communities, traditions and cultures. और state वही strong था which had ability to bring these two factors together. Manu ये भी कहता था duty of the king was to protect, raksha, and nurse, palan, his people, praja. State was looked upon as a symbol of security and stability. The political thinkers did not favor the imposition of monolithic structure of administration and law over the entire state. हमेशा कहते रहे, यहाँ यज्ञवल्क्य के स्मृति में भी कहा है कि प्लूरलिस्टिक, यज्ञवल्क्य के स्मृति में कहा गया है प्लूरलिस्टिक और मल्टी कल्चरल एस्पिरेशंस वे गिवन स्पेसेस. स्टेट में pluralistic and multicultural aspirations were given spaces. Mitakshar कहता है, advises the king not to impose customs of his own country on the conquered people. ये शायद second, third century के समय की है, second, first century, that not to impose customs of his own country on the conquered people. So pacification of the conquered dominion formed an important amongst the writers on statecraft. Manu, Kautilya, उन लोगों ने कहा जो conquered dominion है उसको pacification की जरूरत है, लोगों को सूदनिंग की जरूरत है, उनकी रक्षा की जरूरत है, तभी तुम किंग हो सकते हो. So duties of the king to guard property of the minors, widows, women without guardians and support the helpless, aged, blind, crippled and orphan and diseased. ये भी ड्यूटी था किंग का. यज्ञवल्क्य यहाँ तक कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, उसमें बुद्धिस्ट और जैन रिलीजियस माइनॉरिटीज थे, उनका ख्याल रखना. Manu shows hostility to heretics than in other smritis. Maybe during his time Brahmins felt threatened by heretics. Heretics ज़्यादा हो गए थे, Brahmin कम थे, so Brahmins felt threatened by the heretics. So overall, what we get in the processes of proliferation of state from we have to define from 2nd century BC to 6th century AD. What we see that थोड़ा सा तो मोरे डिस्कस करना ही पड़ेगा क्योंकि it was a centralized empire. जनपदास भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि how state was formed. और उसके बाद धीरे धीरे किस तरह से 2nd century में इतने सारे रूलर्स आए, बाहर से भी आए, लोकल रूलर्स थे, तो ये सब किस तरह से इन्होंने
इनके छोटे-छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ होने के बावजूद भी जो इकोनॉमी था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि स्टेट को चला रहा था। देन आल्सो यू सी दैट हाउ the in Kushana. Kushan was an empire, but it was not an empire like the Mauryas. So उसका भी कैसे क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या सिस्टम्स थी, क्या व्यवस्थाएं थी उसकी, हाउ ट्रेड वाज प्रॉस्परिंग इन कुशान एम्पायर, और मौर्य पीरियड के डिक्लाइन के बाद सेकेंडरी स्टेट फॉर्मेशन कैसे हुआ, जो कलिंग में हुआ, सातवाहंस का हुआ, ये सब डेक्कन में हुआ, तो ये सब भी थोड़ा देखोगे। फिर गुप्त पीरियड में हाउ द स्टेट फर्दर बिकेम स्ट्रॉन्ग, बट स्टिल देयर वाज फ्यूडलाइजेशन of state, or because of land grants the power center was also shifted to these feudal lords, और कैसे स्टेट को चलाने का पॉलिटिकल प्रोसेसेस क्या थे जिससे कि स्टेट चल रहा था। सो ऑल द थियरीज, द कंक्लूजन, ये सब करके आप इसको एक पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन एंशिएंट इंडिया में इसको कर सकते हैं, स्टेट फॉर्मेशन। ओके, अब बताओ, पूछो। हेलो, स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. सब लॉग इन करके भाग जाते हो क्या? हाँ? No, ma'am. नो नहीं, नहीं, कोई बात यही है मैम। हाँ हाँ, कोई सवाल नहीं है। ओके ओके, एनीवन एल्स? Could you suggest some readings if there isn't any other question? रीडिंग्स देखो, एंशियंट इंडिया में इसमें एक तो हरमन खुलके का देख लेना, भैरवी साहू और हरमन खुलके का है, थियरिकल देख लेना, स्टेट प्रोसेस, स्टेट फॉर्मेशन, ठीक है, और सेकेंडरी स्टेट वेरा का उसमें थोड़ा सा मिल जाएगा तुम्हें। उसके अलावा आर एस शर्मा, रोमिला थापर, डी कोशाम्बी है, रणबीर चक्रवर्ती देख लो स्टेट फॉर्मेशन में, और क्या देखोगे, एस सी राय चौधरी देख लो पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह भी है, देख लेना। बुक्स तो बहुत हैं लेकिन इतना तो नहीं कर पाओगे तुम लोग। आर एन नांदी का स्टेट फॉर्मेशन देख सकते हो, वो 6th सेंचुरी एडी से है, लेकिन फ्यूडलिज्म पे थोड़ा सा है उसमें। साउथ तो हमें करना नहीं है, लेकिन नीलकंठ शास्त्री देख सकते हो, जस्ट टू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। फिर तुम देख सकते हो स्टेट के लिए, कुशान स्टेट के लिए बी एन मुखर्जी देख सकते हो। बी एन मुखर्जी की बहुत सारी किताबें हैं, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। आई थिंक दैट्स सफिशिएंट। और बुक्स चाहिए ताना? And ma'am, could we in this answer add Romila Thapar's theory हाँ of state formation हाँ, from बिल्कुल बिल्कुल। lineage to state? रोमिला नहीं बताया मैंने, रोमिला देखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। Okay, ma'am. Thank you. वैसे तो बॉन्गार्ड लेविन की मॉडर्न इंडिया देख सकते हो, किताबें तो बहुत हैं। एक तो इस समय लाइब्रेरी भी एक्सेस करना बच्चों को मुश्किल हो रहा है, there's no dearth of book anyway। बीडी चट्टोपाध्याय की देख सकते हो, तो जो अर्ली इंडिया उसमें कुछ मिल जाए, मेकिंग ऑफ अर्ली इंडिया। ओके, और कोई सवाल स्टूडेंट? नहीं, कोई बात नहीं, इसको करो,
नेक्स्ट वीक तो ऑनलाइन ही रहेगा और शायद एक आध क्लास हम मिस भी कर जाएं, सो बट डोंट वरी, विल मेक अप ऑन द वीकेंड्स और करके देख लेंगे। और आई विल टेल यू इफ आई कैन, क्योंकि कुछ क्लैश हो रहे हैं और उससे। और अभी करो, अब तो हमने कर लिया है introduction, that is historiography. We have done political processes, we have done economic processes. बस इतना ही किया ना हमने, और कुछ किया है? पॉलिटिकल प्रोसेसेस भी अभी कर लिया ना? हाँ, और क्या किया? इकोनॉमी यस मैम। और फर्स्ट चैप्टर, 3 चैप्टर हो गए ना हमारे। ओके, सो नेक्स्ट विल डू कास्ट। ठीक है, भी करेंगे, कास्ट करेंगे। ओके, और 28 के बाद तो हम मिल रहे हैं क्या? Yes, Yes, ma'am. हाँ, ठीक है, देखते हैं हाउ ऑफलाइन ऑनलाइन मोड दोनों चल सकता है इन केस ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अवे फ्रॉम दिल्ली। कुछ हो सकता है तो विल ट्राई। ठीक है, चलो थैंक यू मैम। चलो, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. बाय।